in the progress of maritime sector, and we are eager to hear his thoughts as we embark on today's journey together. May I request all of you to kindly give him a huge round of applause as he comes forward. नमस्कार, स्वागतम सुस्वागतम. Honorable Minister for Port Shipping and Waterways, Shri Sarvan Manmohanji. Honorable Minister of Labour and Employment and Youth Affairs and Sports, Dr. Mansukh Mandaviya ji. Shri Gajendra Singh Shekhawat, Honorable Minister of Culture and Tourism. Honorable Minister of State, Port Shipping and Waterways, Shri Chandani Thakur ji. Honorable Shri Biyuram Wahe ji, Minister for Health and Family Welfare, Water Resources, Arunachal Pradesh. Honorable State Minister for Ports, Goa, Shri Alexio Sikera ji. Honorable Minister of Transport, Uttar Pradesh, Shri Dayash Shankar Singh ji. Respected Admiral Devendra Kumar Joshi ji, Lieutenant Governor of Andaman and Nicobar Islands. Friends, dignitaries, delegates, ladies and gentlemen, it gives me great pleasure to welcome you all to the Bharat Sagar Virasat Sangam, the India Maritime Heritage Conclave 2024. This is the inaugural session of this conclave. Today we gather to embark on a remarkable journey of exploration and reflection, one that seeks to deepen our understanding of India's prominent role in global maritime history. India has always been a maritime nation. Our gods, as you know, had a very important role to play in the Vedic heritage, and among them Varuna, the god of water, held supreme place. And from the ancient ports of Lothal, Kodungalur and Bharuch to the great maritime empires of the Cholas and the Guptas, India has been central to global trade, science and cultural exchange. It was the sea that propelled the spread of Indian culture and heritage, language, literature, theatre, music, scripts, religion, and so on to many countries across the world. We need to be conscious of this heritage, aware of this heritage, even as we develop the maritime sector. Through initiatives like the Sagarmala project, India is modernizing its ports, strengthening its shipping infrastructure, and developing new trade corridors. Our Blue Economy initiatives focus on sustainable shipping, marine conservation, and harnessing ocean resources for the future. Honorable Minister Shri Sonowal ji, Honorable Minister Shri Mandaviya ji, Honorable Minister Shri Shekhawat ji, other Honorable Ministers seated on the dais, distinguished guest delegates, ladies and gentlemen. First and foremost, I wish to extend my heartfelt thanks to the Honorable Minister for giving me an opportunity to be part of the India Maritime Heritage Conclave. Representing Andaman and Nicobar Islands, with 1/3 the country's exclusive economic zone and 836 islands, we've always been a major player in the maritime construct of the country. Historically, we are all aware of how the spread of civilization eastwards through the times of the Cholas happened, and a recent recognition of it was the naming of erstwhile Port Blair as Sri Vijayapuram
very, very recently. You are all aware of the upcoming International Container Transshipment Terminal in Kalakia Bay, where all the codal formalities are over. DPR, consultancy reports, environmental impact assessment, asking expression of interest, everything is over. There are about 12 major consortiums who have expressed their willingness to participate on the PPP model. Only the final cabinet clearance and thereafter the voting of RFP is the state, and I have request the Honorable Minister to kindly guide so that the landmark event not only for the entire country in its first phase, due for completion in the next 5 years itself, it will have a container handling capacity of 4.3 million TEUs. And on completion of the final phase, this capacity will go to 16.5 million TEUs, which will be the second biggest container handling facility in the entire country. Apart from that, also along the PPP board, we have the Port of Trivandrum, Deepwater Port project proposal underway. इंडिया मैरीटाइम हेरिटेज कंक्लेव में भारत सरकार के जहाज मंत्री आदरणीय सर्बानंद सोनोवाल जी, भारत सरकार के श्रम एवं सेवायोजन, युवा और खेल मंत्री आदरणीय डॉक्टर मनसुख मांडविया जी, भारत सरकार के पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री आदरणीय गजेंद्र सिंह शेखावत जी, आदरणीय मंत्री शांतनु ठाकुर जी, आदरणीय मिनिस्टर हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर अरुणाचल प्रदेश आदरणीय दियाराम आगे जी, आदरणीय लेक्सो शेखोरिया जी, एडमिरल देवेंद्र कुमार जोशी जी, यहाँ उपस्थित सभी प्रदेश से आए हुए सभी मंत्रीगण, सभी सम्मानित नागरिक बंधुओं, राष्ट्रीय जल प्राधिकरण के अनुसार ही उत्तर प्रदेश में भी उत्तर प्रदेश जल प्राधिकरण बोर्ड का गठन कर दिया गया है। उसमें माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने अध्यक्ष, अभी फिलहाल परिवहन मंत्री के रूप में उसको अध्यक्ष नामित किया गया है, और उपाध्यक्ष एक जो विशेषज्ञ जो जल से संबंधित हो उनको रखने का प्रावधान किया गया है। Honorable Union Minister for Port Shipping and Waterway, Sonovar, Honorable Minister for Labour and Employment and Youth Affairs and Sports, Sri Mansukh Mandaviya, Honorable Minister of Culture and Tourism, Sri Shekhawat, Honorable Minister of States for Port Shipping and Waterways, Sri Santanu Thakur, Honorable Minister Vijay Kumar Sinha, Honorable Minister Wage, Honorable Minister Dayesh Shankar Singh, Honorable Admiral Devendra Kumar Joshi, Lieutenant Governor of Andaman and Nicobar Islands, distinguished dignitaries, ladies and gentlemen, represent the state of Goa. Goa is known for its beaches, sand, sun, and if I may say fun too. But Goa also has a long history, which I think today gives me a chance to highlight when it comes to maritime activities, which as far as Goa is concerned stretches back to many a century. I congratulate the Honorable Union Minister for organizing the Indian Maritime Heritage Conclave. For in it, we see that this conclave is part of an initiative that aligns seamlessly with the vision of Viksit Bharat led by our Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi ji. Honored to be here today as we begin the important journey to discover the celebrate India's vast maritime heritage. The theme of this year's conclave was for the understanding India's
position in the global maritime history is truly significant as it invites us to reflect on our rich past and our continued prominence in the global maritime leadership. India's maritime history dates back thousands of years, with the Indian Ocean service as a vital link of trade, culture and ideas. From the ancient port of Lothal and Mugees to the bustling modern harbour like Mumbai and Chennai, our nation has always been at the crossroads of this global maritime activity. India's strategic location in the Indian Ocean made it a beacon of global maritime history. This rich history, which includes the spiritual reverence for Varuna, the god of water and oceans, it is deeply embedded in our cultural narratives. Traditional festivals like annual boat races in Kerala, known as Vallam Kali, celebrate our enduring connections to the seas. India's 7,500 kilometers long coastline boasts a maritime history rich with achievements. The Indus Valley civilizations demonstrated early maritime ingenuity with the dockyard at Lothal, one of the world's earliest known docks. During the Chola dynasty, India's naval power extended across Southeast Asia, establishing trade links and spreading Indian culture. As evidenced by the architectural marvels of Angkor Wat in Cambodia and Borobudur in Indonesia, the Vijayanagara Empire further showcased India's maritime prowess with the bustling port of Hampi, facilitating commerce between India and distant islands like Persia, Arabia and Southeast Asia. Under the visionary leadership of Honorable Prime Minister Narendra Modi ji, the Government of India is establishing the National Maritime Heritage Complex in Lothal, Gujarat. This complex, developed in collaboration with Ministry of Port, Shipping and Waterways and the Ministry of Culture, will serve as a repository of our past and bridge out to a future innovation and collaborations. The NMHC will feature exhibits on the ancient ports of maritime trade, shipbuilding techniques and cultural exchange, offering an immersive experience to India's maritime history. The Indus Valley civilization was a thriving port city that played a pivotal role in trade and cultural exchange. Its dockyard, one of the earliest of its kind, showcases India's advanced maritime prowess and technologies. We will undertake further excavation at the Lothal ASI site to uncover more ancient port infrastructure, shipbuilding techniques and trade goods, enhancing our understanding of India's early maritime history. As we embark on this journey at the Indian Maritime Heritage Conclave, we must also look to the future. Our oceans and seas offer great opportunities and challenges for sustainable shipping to maritime biodiversity preservation and climate change mitigation. India's maritime history gives us a legacy to be proud of and a responsibility to ensure our ocean remains a source of prosperity, security and sustainability. I extend my gratitude to everyone who have contributed to the IMHC 2024 and the development of National Maritime Heritage Complex. I commend the archaeologists, historians and experts leading to excavations at the Lothal and other maritime heritage sites. Together, we are preserving India's maritime legacy and securing our position in global maritime history. I urge all of you, academicians, researchers, policymakers, industry leaders, and students
to engage, collaborate and contribute to this endeavor. Let us explore, celebrate and safeguard India's rich maritime heritage as we chart the course for the future where our maritime influence over once again plays a defining role on the global stage. Thank you and Jai Hind. मैरीटाइम हेरिटेज कॉन्क्लेव के शुभारंभ प्रसंग में हमारे बीच में उपस्थित जिसके नेतृत्व में इस कार्यक्रम का आयोजन हुआ है, इसे हमारे साथी मंत्री आदरणीय सर्बानंद सोनोवाल जी, मेरे साथी मंत्री और जिन्होंने अभी इंडियन मैरीटाइम हिस्ट्री के बारे में विस्तृत विषय रखा, इसे आदरणीय गजेंद्र सिंह जी, शांतनु ठाकुर जी, विजय कुमार सिन्हा जी, पीयूराम वाघे जी, एलेक्सियस इक्वेरिया जी, दया शंकर जी, एडमिरल देवेंद्र कुमार जोशी जी, सभी उपस्थित भाई एवं बहनों, सबसे पहले तो मैं सोनवाल जी और स्पोर्ट्स शिपिंग एंड वाटरवेज मिनिस्ट्री को अभिनंदन करता हूँ, क्योंकि मैरीटाइम हेरिटेज कॉन्क्लेव का आयोजन करके आपने देश को एक नई दिशा दी। कोई भी देश है, उसकी विरासत हमें दिशा भी देती है, हमें आगे का दर्शन भी देती है। और इसलिए विरासत को संयोज के जब मोदी जी ने विकसित भारत की कल्पना रखी, उस वक्त उन्होंने 5 प्रांत देशवासियों को लेने के लिए कहा था। पहला, विकसित भारत का संकल्प, दूसरा, गुलाम मानसिकता को छोड़ देना, तीसरा, विरासत से प्रेरणा लेना, चौथा, कर्तव्य का निर्वहन करना और पांचवा, सब एक संकल्प के साथ आगे बढ़ना। विरासत से प्रेरणा लेके हम विकसित भारत बना सकते हैं और इसलिए हमारी विरासत बहुत जाजरमान है। ये देश में क्षमता की कोई कमी नहीं थी, ना है। यहाँ जब गजेंद्र जी देश की मैरीटाइम हिस्ट्री के बारे में बता रहे थे, दोस्तों सदियों से हम मैरीटाइम सेक्टर में डेवलप थे और डेवलप आज भी है। और एक एकलौता देश है जिस देश का नाम से कोई समुद्र का नाम पड़ा, हिंद महासागर इस देश के नाम से बना हुआ। इतना ही नहीं, ये भी सत्य है, जिन्होंने दुनिया का शासन करा है उन्होंने पहले समुद्र पर शासन करा है। जिसने समुद्र पर अपना साम्राज्य विस्तारित करा है उन्होंने दुनिया को प्रभावित करा। और इसलिए एशियन साइज समय में और हम भाग्यशाली हैं, 5000 साल का मैरीटाइम विरासत तो हमारे सामने। दुनिया का सबसे पुराना डॉक लोथल में आज भी 5000 साल पुराना डॉक आज विद्यमान है, बेहसन। ये हमारी विरासत है। समय समय पर हमने दुनिया के साथ ट्रेड भी करा, उसके साथ रिश्ता भी रखा, संपर्क संबंध भी रखा। आप दक्षिण के स्टेट देखिए, केरला हो, आंध्र प्रदेश हो या तो तमिलनाडु हो, चेरा वंश हो, पल्लव वंश हो, पांड्या वंश हो, नायका वंश हो, सभी ने अपने अपने समय में दुनिया के साथ ट्रेड भी करा था, दुनिया के साथ संपर्क भी बनाए थे। अब गाना में जाइए, गाना में आपको ओखा रोड मिलेगा, एक रोड का नाम ओखा बनाया। आप गल्फ कंट्रीज में जाइए, कई कंट्री में सलाया एक छोटा सा गुजरात का पोर्ट है, वो जगह पे सलाया स्ट्रीट है, वो जगह पे सलाया मार्केट है। हमारा रिश्ता उसके साथ था, हम उसके साथ ट्रेड करते थे। गुजरात में अहमदाबाद में मस्कती मार्केट है। क्यों? मस्कत टू गल्फ ऑफ कैम्बे टू साबरमती रिवर इनलैंड वाटरवेज टू अहमदाबाद, ये समय में ट्रेड चलता था। ये हमारा मैरीटाइम हिस्ट्री है। और उस वक्त जब हम दुनिया से राज करते थे उसका प्रभाव भी मैं मानता हूं कि इतना ही था। और इसलिए आज साउथ के कई टेंपल में इंग्लिश हेड पहने हुए पुरुष का सिंबल है।
दोस्तों ये सिंबल मार्को पोलो का प्रतीक है। उस वक्त रिलेशनशिप का सिंबल प्रतीक को रख के करा जाता था। ये इंडिया की रिच मैरीटाइम हेरिटेज का उत्तम उदाहरण है। इतना ही नहीं, मैरीटाइम सेक्टर में आज उस समय का कई ऐसे सेक्टर का हम अध्ययन कर सकते हैं और हमारे सामने है। गुजरात में कच्छ में एक मालम कम्युनिटी है, मालम कम्युनिटी। जब मोदी जी राज्य के मुख्यमंत्री हुआ करते थे, चीफ मिनिस्टर हुआ करते थे, उस वक्त मोदी जी ने ये मालम सी ट्रैवल कम्युनिटी का जो उन्होंने बुक लिखी थी, वो सी ट्रैवल करते थे, तब जिस वॉल्यूम का यूज करते थे उसका कंपाइलेशन करवाया था। दोस्तों आपको आश्चर्य होगा, उस वक्त जब वो दुनिया में ट्रैवल करते थे ना, आज हम इंजीनियर बनने के लिए इंजीनियरिंग की पढ़ाई करते हैं, हिस्ट्री की पढ़ाई करते हैं। उस वक्त किसी को समुद्र में ट्रैवल करना हो तो ये मालम लोग वहां इंस्टीट्यूट चलाते थे। लोग वहां अध्ययन करने के लिए आते थे, नहीं तो केवल भारत के, लेकिन दुनिया से आते थे, उससे सीखते थे। और उन्होंने ऐसी समुद्री यात्रा के लिए कौन सा विंड होगा, कब आपको निकलना, दूर समुद्र में कैसे तरंग होंगे, तूफान आना है तो कैसा सिम्टम होगा, पवन की गति कैसी होगी, स्टार कहाँ हो तो हम कौन सी दिशा में है, इतना डीप नॉलेज ये देश के पास था। ये देश के हम वासी है दोस्तों, इसलिए हम दुनिया को दिशा दे सकते हैं जो पूर्व में हमने दी थी। ये नॉलेज का उपयोग करके हम हमारे भी भविष्य को सुनिश्चित कर सकते हैं। उसमें से मोदी जी के दिमाग से नेशनल हेरिटेज कॉम्प्लेक्स निकला है, मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स। दोस्तों केवल कॉम्प्लेक्स नहीं है। जब मैंने पहली बार मोदी जी के सामने विषय रखा था, तब उन्होंने कहा था कि देश और दुनिया में म्यूजियम तो बहुत बने हैं, लेकिन केवल म्यूजियम नहीं बनाना है, दुनिया आके यहाँ रिसर्च करे, इंडिया का मैरीटाइम हिस्ट्री को देखे समझे। इतना ही नहीं, हमारे सभी कोस्टल स्टेट उसने अपनी अपनी मैरीटाइम हिस्ट्री है। शिवाजी महाराज ने उस वक्त नेवी बनाई थी और कान्होजी आंग्रे को आज भी हम एक बेस्ट नेविगेटर के रूप में याद करते हैं। इतना ही नहीं, 17वीं शताब्दी में जब मुगल शासन का अंत समय था, इस समय में देश में सूरत में शिप बिल्डिंग की इंडस्ट्री चलती थी। वाडिया फैमिली परंपरागत तौर पे व्यवसाय में जुड़े हुए थे और हम इतने अच्छे शिप बिल्डर थे, दुनिया यहाँ शिप परचेज करने के लिए, खरीदने के लिए आते थे। और जब मॉनसून पूरा होता था, 100, 150, 200 शिप बनकर तैयार रहती थी। दुनिया के लोग शिप को खरीदने के लिए इंडिया में आते थे। आप लोग आज से 3 साल के बाद, आज फेज 1 पूरा होने आया है, 3 साल के बाद जब मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स की विजिट करेंगे ना, तब आपको मोदी जी ने कहा था कि म्यूजियम नहीं, सेल्फ एक्सपीरियंस होना चाहिए। आपको लगना चाहिए जब आप 3 साल के बाद हेरिटेज कॉम्प्लेक्स की विजिट करेंगे तो आप 5000 साल पुराना व्यक्ति बन जाएंगे। आपको वियर भी वो पहनना, अंदर ट्रेड भी कुछ खरीदना है तो कोई का यूज भी 5000 साल पहले होता था वही करेंगे। अंदर ट्रेडर्स 5000 साल पहले जैसा ट्रेड करता था वैसे ही आप देखेंगे, उसको देखेंगे। दोस्तों उस वक्त का लाइफस्टाइल आप क्या करेंगे। Namaskar. Today in this very important conclave, we have the kind presence of Honorable Indian Minister for Labour and Employment, Sports and Youth Affairs, respected Mansukh Mandavia ji, Honorable Indian Minister for Culture and Tourism, respected Gajendra Singh Shekhawat ji, respected Indian Minister for State for Port, Shipping and Waterways, Santanu Thakur ji, respected Deputy Chief Minister of Bihar, Vijay Kumar
Sinha ji, Associate Minister from Arunachal Pradesh, Bioram Wagi ji, Minister for Goa, Alexio Sikuria ji, respected Minister from Uttar Pradesh, Dayasankar Singh ji, respected Admiral Ravindra Kumar Joshi ji, and the Secretary, Ministry of Port Shipping Waterways, T.K. Ramachandran ji, all the dignitaries, scholars present here today. I am delighted to welcome you all to this very, very important, meaningful conclave based on India maritime heritage. So I believe this particular subject will inspire every participant to have brainstorming discussion and also to provide best possible input to the making of this particular conclave a grand success. It is an honor to stand before you today as we gather for the India Maritime Heritage Conclave 2024. This is a moment to celebrate India's glorious maritime heritage, a legacy that has shaped not only our nation but also the history of the world. It is also a moment to reflect on how we can honor, preserve, and learn from this extraordinary past as we navigate towards the future. The theme of this year's conclave, Quest for Understanding India's Position in Global Maritime History, is both timely and important. It allows us to delve deeper into our rich maritime heritage, acknowledge India's contribution to global maritime trade, science and culture, and explore how to build on this legacy in the 21st century. India has always been a land deeply connected to the sea, with a coastline stretching over 7,500 kilometers. The ocean has been our partner for thousands of years. Our ancestors were pioneers of the sea, building some of the most remarkable ports and harbors of the ancient world. Our great nation, with its rich and diverse history, has been a maritime nation for over 5,000 years. From the Harappan civilization to the present day, our connection with the sea has profoundly shaped our culture, economy, and worldview. We engaged in trade with Mesopotamia, Egypt, and Persian Gulf, trading items like beads, jewelry, and cotton. Ancient ports like Nothal, Kaveri, Pattinam, Malappuram, and Mujiji were thriving center of trade, bustling with ships carrying goods, ideas, and culture to the distance. So, these ports were not just places of commerce, but also gateway of connection, where civilization met, exchanged, and enriched each other. In the medieval period, our role in the spice trade was unparalleled. Indian merchants not only traded with Arabia, China, and South Asia, but also established the Silk Road of the sea, facilitating the exchange of goods, culture, and ideas. The story of India's maritime heritage is a story of innovation, courage, and vision. The dockyard at Nothal, for example, stands as a marvel ancient engineering, one of the oldest known in the world. Our heritage is not only about trade, it is also about culture. The sea brought
more than wealth to our soul. It brought new ideas, religious, arts and music. The Cholas with their powerful navy spread Indian culture far and wide, establishing connection with Southeast Asia that continue to influence those regions even today. The ocean was not just a route for commerce, but also a bridge of understanding, a reminder that the sea unites more than it divides. Our shipbuilding expertise is another crucial aspect of our maritime legacy. Ancient texts like the Yukti Kalpataru provide detailed instruction on shipbuilding large durable ships. Our seafarers mastered the monsoon winds, turning them into pathways that brought prosperity and knowledge. Mastering the monsoon winds allowed them to trade efficiently across the Arabian Sea and the Bay of Bengal. Today, as we look back at this proud history, we also recognize our responsibility to protect it. Maritime heritage is not just about preserving artifacts or old tales. It is about keeping alive the spirit of exploration, innovation, sustainability that defined our ancestors. Under the visionary guidance and leadership of our Honorable Prime Minister, Shri Narendra Modi ji, National Maritime Heritage Complex at Lothal is a step in that direction, a place where we will bring our maritime past to life for future generations. It will showcase the brilliance of our ancestors while inspiring young minds to carry forward their legacy. These are the values we need today as we face challenges like climate change, environmental degradation and global instability. This conclave is a platform for dialogue and collaboration. It is an opportunity to bring together scholars, policymakers and maritime professionals to exchange ideas and craft solutions for the future. Together we can ensure that India's maritime culture remains a source of pride and inspiration for generations to come. In conclusion, I'd like to remind all of us of something simple but powerful. The ocean is not just a resource, it is a legacy. It has given us food, trade and prosperity, but it has also given us stories, wisdom and identity. Let us honor this legacy by working together to preserve our maritime heritage. And as we look to the future, we are committed to reviving its maritime heritage and reclaiming its rightful place as a global maritime leader. With these few words, I sincerely thank to all of you present here today. I am confident that whatever we are doing today, it will give a lot of impetus to the growth of our heritage for the future. Because this particular conclave is being organized under the dynamic leadership of our Honorable Prime Minister Narendra Modi ji. And in the last 10 years, whatever success stories are being created, it is only happening only because of our able leadership of our Honorable Prime Ministers. And today, it is his direction and also his vision which is helping us all the time to put our best possible effort to the growth of maritime trade, maritime industry and maritime voices.
and I hope all the participant event. I especially welcome to all the scholars and domain experts from the countries UK, Cambodia, Sri Lanka, Italy, Greece, Oman, Iraq, Philippines, Japan, Thailand and Vietnam. Welcome to this conclave, and I hope that your participation will definitely make this conclave a very, very meaningful and productive one. Thank you. Jai Hind! His dignitaries on the bag. And with the memento, the class should continue public by Sri Ramachandran ji to the Honorable Minister. He has truly embraced this country. Honorable Minister Shri Sarvanand Sonowal, Honorable Minister for Port Shipping and Waterways, for his guidance, inspiration and leadership in organizing this event as well as in the development of National Maritime Heritage Complex. I also would like to thank Dr. Manshukh Mandavia, Honorable Minister for Labour and Employment and Youth Affairs and Sports, for taking time out and being with us on this occasion, and also his inputs and guidance in the development of NMHC. Would also like to thank Shri Gajendra Singh Shekhawat, Honorable Minister of Culture and Tourism, for being with us today and also supporting in the development of NMHC project. Would like to thank Shri Shantanu Thakur, Honorable Minister of State, Port Shipping and Waterways, for his guidance and support. Would also like to thank Shri Vijay Kumar Sinha, Honorable Deputy CM Bihar, Shri B.U. Ram Baghe, Honorable Minister, Arunachal Pradesh, Shri Dayashankar Singh, Honorable Minister, Transport Uttar Pradesh, Shri Alexio Sekiro, Honorable Minister, Goa, and Mr. Devendra Kumar Joshi, Lieutenant Governor of Andaman and Nicobar Islands. Would also like to thank Dr. Shinde, Chairman of Curation Committee NMHC, who has been instrumental in putting together this event. And also would like to thank all the speakers, panelists and participants who have accepted our invitation and are here with us today. Would also like to thank the media and organizers of this event. Thank you. उत्तर प्रदेश की परमादरणीय मंत्रीगण उपस्थित है, बिहार की परमादरणीय उप मुख्यमंत्री भी उपस्थित है, बाकी उत्तर प्रदेश की है, अरुणाचल प्रदेश, गोवा और अंडमान निकोबार की भी सीट है। तो ये जो प्रिविलियन के सिलसिले में हर प्रदेश को इनमें जो भी एक उनको भी दायित्व लेनी है और उसको भी उनका एक विशेष रूप से अपना प्रदेश का जो सामुद्रिक इतिहास, नदी का जो भी इतिहास है, उसको संरक्षित करने के लिए मुझे लगता है कि लोथाल में जो व्यवस्था की गई है उसका लाभ उठाना चाहिए, क्योंकि हर प्रदेश का अपना खुद का एक ऐतिहासिक एक बहुत बड़ा शक्तिशाली मतलब ये गरिमा है। तो मुझे लगता है इनको अगले 5000 साल का जो इतिहास उसका साथ जोड़ने के लिए ये प्रिविलियन का जो व्यवस्था रखा गया है, मुझे लगता है इनके बारे में आप लोगों को विशेष रूप से चर्चा करना चाहिए। इतिहास संस्कृति का एक बड़ा क्षेत्र बनता है नालंदा विश्वविद्यालय का भी, और लोथल में निर्माणाधीन राष्ट्रीय समुद्री विरासत में बिहार की उस पीरियड की जो हमारा हिस्ट्री है, इतिहास है, उसके लिए हम लोग चाहेंगे, प्रयास करेंगे कि उसका प्रदर्शनी में भागीदारी हो और उसके लिए स्पेस मिलेगा। तो हम निश्चित तौर पर वहाँ की सरकार इसको प्राथमिकता में लेकर के अपनी विरासत को बढ़ाने का, आने वाले पीढ़ी को अवगत कराने का प्रयास करेगा।